Hey students, Shyamal Kapadia here. We are going to talk today about lenses as a chapter. Wonderful chapter, easy, lot of diagrams and very colorful will make it. Yeah, so the chapter, the name we're going to start with is lenses. Now what exactly is a lens? Lens का मतलब क्या है? लेंस है ना एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है. इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम विच हैज टू सरफेसेस. कितने सरफेसेस है? दो सरफेसेस है, राइट? या तो दोनों बल्जिंग आउटवर्ड हो सकते हैं या बल्जिंग इनवर्ड हो सकते हैं, और वन प्लेन एंड वन बल्ज. सो देयर कैन बी अ कॉम्बिनेशन. बट लेंस, इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज अ लेंस, a lens is a transparent medium which refracts the ray of light when the light passes through it. Simple definition. जब ray of light आता है, लेंस को टच करेगा, हिट करेगा, तो वो बेंड होगा, रिफ्रैक्ट होगा, डिविएट होगा. Are you getting it? So this is nothing but a definition of a lens. Yes. Now we're going to talk about my first answer. Actually, first answer is what is lens. तो मैं खाली एक ब्रीफिंग लिखता हूं, कीवर्ड्स लिखता हूं, ठीक है ना? इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. Second thing which I can talk about, it is a refracting surface. And third, it bends the ray of light which falls on it. It bends the ray of light which falls on it. So three key points about a lens. दो टाइप के lenses है मार्केट में अपने, ठीक है ना? One of them is the main lens called convex lens and the second is a concave lens. So guys, my second answer for y'all, convex lens and a concave lens. अच्छा, convex lens है ना, कुछ इस तरह से दिखेगा. First, we call this as a biconvex lens. Bi मतलब दोनों. Both the surfaces are outward bulging surfaces. So it is a biconvex lens. This is called a plano-convex lens. Obviously, नाम से ही पता चलता है, one surface is a plane surface, so plano, and another is a bulging surface. And the third is, we call this as a concavo-convex. टेक्स्ट बुक में वो लोग ने पॉजिटिव मेनिस्कस करके नाम दिया है, पॉजिटिव मेनिस्कस. बट वी ऑल्सो कॉल इट एज अ कॉन्केवो. जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यार. कॉन्वेक्स लेंस. सो ये तीन टाइप के कॉन्वेक्स लेंसेज मार्केट में है, और भी है, बट दीज आर द थ्री बेसिक्स. कॉन्केव लेंस के बारे में, इफ यू ड्रॉ द फिगर, one lens is this way, one lens is going to be this way, and the other lens should be this way. Okay, this is going to be definitely biconcave. This lens is going to be a plano-concave, and this is called a negative meniscus. We also call this as a convexo, उल्टा जाने का, convexo concave lens. ठीक है ना? सो तीन टाइप के कॉन्वेक्स और तीन टाइप के कॉन्केव लेंसेज है, which diagram should be known. Yes. Okay. Convex lens क्या करता है? Let's study out here. So talking more about convex lens and a concave lens. ठीक है. Convex क्या करता है? सुनो मेरी बात. जब भी रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स पे गिरता है, वो रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है. कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे मिलाएगा, मिलन की स्थिति होगी. सो आई विल से द फर्स्ट पॉइंट, सिंपल कीवर्ड्स लिख रहा हूं. इट कन्वर्जेस द रे ऑफ लाइट. ऑलराइट. कॉन्केव लेंस क्या करता है? टेल मी. Concave lens पे when the rays of light fall, they are diverged. So it is a diverging lens. So it diverges the rays of light falling on it. First pointer, students. Second pointer. Hence, convex lens is called a converging lens,
and concave lens is called a diverging lens. बराबर है, अच्छी बात है. What more can you speak about a convex lens? Convex lens का अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे ना, ध्यान से देखो ना, can I say the central portion is thicker and the edges are pointed? So I can say the center of a convex lens is thick and the edges of a convex lens are tipped, tapered, pointed. Concave देखो, concave का center thin है और edges are thick. So I can say the central portion of a concave lens is thin and the edges, the ends बोलते हैं, ends are flat, they are thick. This was about a convex and a concave lens. और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट अभी एज ऑफ नाउ मैं और एक दो पॉइंट ही लिखूंगा. जैसे ही हम लोग रे डायग्राम्स करेंगे, दैट टाइम वी विल सी मोर अबाउट इट. सो फोर्थ पॉइंट एज ऑफ नाउ मैं जस्ट लिख रहा हूं, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. कॉन्वेक्स लेंस है ना, जो इमेज बनाता है ना, इमेज, दे फॉर्म रियल इमेजेस ऑल्सो एंड वर्चुअल इमेजेस ऑल्सो. They can form erect images also, inverted images also. They can form point size images, diminished images, same size images, magnified images, highly magnified images. हर टाइप का साइज, पोजिशन, नेचर सब है कॉन्वेक्स के पास. Yes. So they form real and virtual images, and they form images which are diminished. डिमिनिश मतलब स्मॉल यार, वेरी स्मॉल. ओके, सेम साइज वाले भी इमेज बनाने की क्षमता रखते हैं. एंड दे फॉर्म मैग्निफाइड इमेजेस ऑल्सो, दे फॉर्म हाईली मैग्निफाइड इमेजेस ऑल्सो. सब टाइप के इमेजेस पॉसिबल है. ऑन द अदर एज, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉन्केव लेंस, यस, दे ओनली फॉर्म ओके वर्चुअल इमेजेस. ये रियल इमेजेस नहीं बना सकते. द नेक्स्ट इज इमेजेस आर ऑलवेज डिमिनिश्ड. सीधा बस एक ही टाइप के इमेजेस बनाते हैं. दोज आर कॉन्केव लेंसेस. सो वी स्पोक अबाउट कॉन्वेक्स, कॉन्केव एंड द टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव. माय नेक्स्ट आंसर फॉर यू ऑल इज अबाउट द डेफिनेशंस. अभी सुनो ना, ये लेंस बनते कैसे हैं, ये बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉन्केव बने कैसे, हाउ डिड दे कम इनटू पिक्चर. एक ब्रीफिंग देता हूं, फिर हम लोग उसके डेफिनेशंस पढ़ते हैं. दैट्स माय थर्ड आंसर. सो मेरा आज का पहला आंसर इज व्हाट इज लेंस. आज का दूसरा आंसर, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्वेक्स एंड अ कॉन्केव लेंस. यस, थर्ड आंसर, लुक, यू टेक टू स्फीयर्स, join them, melt and join them. Can I say ये जो बीच का पोर्शन बना, yeah, this one, isn't this nothing but a biconvex lens? And if two lenses, yeah, they form a biconcave lens, look what they happen, how they hold true. ये दो lenses है, okay, you just melt and connect them. Yeah, this portion which is formed is a biconcave lens and cut the rest of the portion. बाकी का पोर्शन कट कर दो. तो दो स्फीयर्स को मेल्ट करो, get them together, connect them and just cut this much portion. You get a biconvex lens. Get two spheres, connect them, add something between them, the glass thing, the transparent medium thing, cut them, you get a biconcave lens. So this is how the lenses are made. They are actually made using spheres, where these are called the centers of the spheres and this is called the radius of a sphere. Again, centers of the sphere, radius of the two spheres. And we are going to study about few definitions like center of curvature, radius of curvature, principal axis, optical center. Go through it. We'll start soon with the definitions. Alright guys,
लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. So my third answer is all about the definitions. Right. Now definition में I'll take an example of a diagram of a lens to explain this concept. Okay, let's consider it is a biconvex lens. Yes, ये एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. Alright. ये जो पॉइंट बना है ना, ये एक इधर और एक इधर, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. हर एक लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं. नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर? राइट, ध्यान से सुनो. देखो ना, ये जो लेंस है ना, कुछ समय पहले आई हैड मेड अ स्फीयर एंड आई हैड टोल्ड दैट यस दिस वाज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका एक टुकड़ा, एक हिस्सा अपना लेंस था. So now tell me, what is center of curvature? Understand, don't by heart. Can I say it is the center? It is the center of a sphere which forms a part of the lens. मतलब क्या कि एक जमाने में ये लेंस, ये सेंटर था. एक जमाने में ये अपना जो लेंस है वो एक पार्ट है. किसका पार्ट है? किसका हिस्सा है? स्फीयर का हिस्सा है. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट, जिसका एक टुकड़ा, पार्ट, इज इट फॉर्म्स द सरफेस ऑफ अ लेंस. सो आई जस्ट राइट इन शॉर्ट दैट इट इज, दिस इज माय फर्स्ट डेफिनेशन, इट इज द सेंटर ऑफ अ स्फीयर which was there once upon a time, imagination, yes, which forms a part or whose surface is a part of the lens, which forms the part of lens. Yeah, tukda hai. Okay, that's it. Talking about the next definition, which is radius of curvature. Radius of curvature is this one basically. So radius of curvature, it's the same definition. Look at that. It is the radius of a sphere. Center of curvature was the center of a sphere. Radius of curvature is the radius of a sphere. Yes, which forms, और जो once upon a time ये टुकड़ा है एक sphere का. So whose surface forms a part of the lens. Yes, so same definition, center के बदले it will be nothing but a radius of a sphere whose surface forms a part of a lens. There are two center of curvatures in a lens, and yes, there are also going to be two radii of curvatures. तो कितने centers होते हैं? दो. and कितने radii? Radius is a singular form, radii is a plural form. So दो centers होंगे, दो radii होंगे. Right. My third definition for y'all, it is going to be about the principal axis. ये जो लाइन बनाया है ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, just like your x axis, that imaginary line is called a principal axis. So what is a principal axis? It is an imaginary axis जो पास होता है टू सेंटर ऑफ कर्वेचर से. So tell me, a principal axis is an imaginary axis which passes through the center of curvature of the lens and also the geometric center of the lens. ये जो लेंस है ना, उसका exactly center point को geometric center बोलते हैं ये. So we also call it as the geometric center of the lens. और ये जो imaginary line है is called the principal axis. So मेरा second definition was radii of curvature. Third is principal axis. Fourth definition is about the optical center. All right. Optical center is this point, O. Optical center is exactly the midpoint, the geometric center of the lens. Yes,
the midpoint or the geometric center of हमारा lens which passes or through which the principal axis pass. And when a ray of light falls on it, it goes without deviation. It does not bend. It just passes straight. 3 point. पहला, ये है geometric center of the lens, the midpoint, the central region of the lens. जिससे एक लाइन पास हो रही है, अरे अपनी प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रहा है यार. And when a ray of light falls on it, it just goes without deviation. No deviation at all. So can I say it does not bend the ray of light when it falls through the optical center? Yes. So this is the significance of optical center. The the last definition, the fifth one I guess, is about the focus. Principal focus बोलते हैं. F1 and F2. There are two foci. Plural form is foci. Single is focus. Alright. So what is focus? पहले बात करेंगे principal focus of a convex lens की. ये वाला. Alright. इसका मैं अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा. फिर हम लोग देखते हैं इसका definition. F2, F1. Alright, and this is our biconvex lens. Now, what is the definition of a focus, a principal focus of a biconvex lens? Listen, diagram पे based है पूरा definition. Rays of light parallel आएगी. The rays of light are coming parallel. After refraction through the convex lens, they meet at a point on the principal axis. So can I say they all meet at the same point on the principal axis, and that meeting point is called the principal focus of a convex lens. So ये point is called the principal focus of a convex lens. So मैं definition अपने खुद का कैसे बनाऊंगा? सुनो, the rays of light are falling parallel to the principal axis after refraction through a lens, a biconvex lens. All the rays converge and meet at a point on the principal axis. Rays parallel जा रहे हैं. Refraction होने के बाद सारे rays converge हो रहे हैं. And they are meeting where? At a point on the principal axis. And that point where they meet is called the principal focus of a convex lens. समझा क्या? Exactly. Nice one. Now, talking about principal focus of a concave lens. Let's see, what is that? Alright, fine. So, पहले तो यार biconcave lens बनाते हैं. So, we have an imaginary axis. Right? This is going to be a biconcave lens. Let's say this is F2, this is F1. Listen. Rays blue से बना है. Yep. So can I say 4 rays लेते हैं वापस. Usually 2 ही होते हैं, but 4 चलेंगे. क्या होगा पता है? They will diverge because this is a diverging lens, that was a converging lens. But when they are traced backwards, they appear to pass through the focus. And yes, I can say when the rays of light, समझ के लो, रट्टा मत मारो, rays of light are falling parallel to the principal axis, after refraction through a biconcave lens, they diverge. But when they are traced backwards, they don't meet. They appear to meet. They appear to meet at a point on the principal axis, and the point where they appear to meet is called the principal focus of a concave lens. समझा तुम लोग को? Yeah, these diagrams are very important to understand the definition. Okay, now if I'm talking about my next definition, this was definition number 5, definition number 6, definition number 7, focal length.
Now, what is a focal length? It's simple. Yeah, very simple. This distance is called focal length, represented by small f. Capital F is focus, small f is focal length. These are the symbols. Okay. Can I say focal length is nothing but the length, the distance between the optical center and the focus, principal focus. So it is the distance between the focus and the optical center. Perfect. And if I see a connection between the radii of curvature or the radius of curvature and the focal length, एक formula मिलेगा. Remember, radius of curvature is nothing but 2 times the focal length. That means अगर ये इतना जो distance है ना, उतना distance ही इधर होगा. तो f plus f is r. So can I say f plus f, which is 2f, is r. This is the radius of curvature. All right. After this, एक छोटा सा experiment है, like a candle experiment. Let's see what they have done out there. So now, proceeding with my fourth answer. आज का मेरा पहला आंसर था कि लेंस क्या है. मेरा दूसरा आंसर था about this concave and the convex lens. And this is my third answer, the definitions. Talking about the fourth answer, a small experiment with the help of a candle. Let's see what the experiment states, right? So experimental verification or experiment based on candle. क्या करने का? एक screen लिया. Okay, I've taken a screen. Now, like this is a screen for obtaining, capturing the images. एक imaginary line, yes, and बीच में एक लेंस रखते हैं हम लोग. Let's keep a lens in between. और एक ट्रॉली जैसा है, ट्रॉली, जिसमें हम लोग कैंडल रखते हैं. So this is like a candle burning just on a trolley. Why trolley? So that I can slide it. So candle behaves like an object, and at the center we have a lens. Let's consider a biconvex lens. ठीक है. मैं क्या करूंगा पता है? कैंडल को है ना, लेट्स से पोजीशन इधर रखा, पोजीशन P1 पे रखा, एंड इसके जो रेज ऑफ लाइट है, ऑब्वियसली दे आर गोना फॉल ऑन दिस and an image is going to be obtained out here. Image जो मिलेगा वो मुझे एक inverted जैसा image मिलेगा. स्क्रीन पे उल्टा इमेज मिलेगा, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, लेंस के अगर इमेजेस दूसरी बाजू बनते हैं, एक बाजू ऑब्जेक्ट दूसरी बाजू इमेजेस, दे आर ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड. और अगर इमेज सेम साइड पे बनता है, they are erect, always erect and virtual. So agar images are made on the same side of the object, the images, the nature is virtual and erect. रट्टा मारो. और अगर images object lens के दूसरे साइड पे बनता है, opposite side, the images are always real and inverted. ठीक है. मैं क्या करता हूं, ट्रॉली को है ना धीरे स्लाइड करता हूं. तो ऑब्वियसली ये जो अपना ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस भी चेंज होते जाएगा. और अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होते गया, लेट्स से दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आई हैव वेरियस रे डायग्राम्स टू स्टडी. व्हाट डू आई हैव? रे डायग्राम्स, जिससे मुझे पता चलेगा कि अगर ऑब्जेक्ट इधर होता तो इमेज कैसा बनता, अगर ऑब्जेक्ट को नजदीक लाया तो इमेज में क्या फर्क आएगा, क्या चेंज आएगा. ये सारी चीजें हम लोग ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया, इधर परफॉर्म किया. वन मोर थिंग, एक पॉइंट है, इसको मैं मूव कर रहा हूं, आई एम स्लाइडिंग दिस अगेन एंड अगेन. A point will come where I will get the sharpest of the image, the brightest of the image. ऑब्वियसली इमेज का क्वालिटी, इंटेंसिटी, ब्राइटनेस, टेक्सचर थोड़ा चेंज होगा. और जब मैं इसको मूव करते जाऊंगा, इसको मतलब कैंडल को, ऑब्जेक्ट को,
तो एक पॉइंट पे अपने को शार्पेस्ट ब्यूटीफुल इमेज मिलेगा, ब्राइटेस्ट इमेज मिलेगा. सो दैट पॉइंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रेस्ड और कैलकुलेटेड आउट. So with the help of this experiment, we are now going to study, and my next answer, rules to draw ray diagram, and we will draw ray diagrams. We have around 5 to 6 ray diagrams for convex and 2 ray diagrams for concave. So let's go through the rules followed by the ray diagram.